बेटा प्लीज मम्मा ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ थैंक यू। वो इतनी ज्यादा पड़ रही है 2 दिन से। अब अभी मेल आ गई बेटी के, फिर छुट्टी करवा दी। सो शी इज हैप्पी। सर माइनस में है वहां पे टेम्परेचर, माइनस सर डिग्री। अभी तो कुछ भी नहीं है, अब आज कभी तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। इस टाइम कितना है? इस टाइम सिर्फ -6 है। -6 तो हमें ठंडी नहीं लगती है। तो वार्मिंग और एनवायरमेंट रहता होगा ना सर। हाँ जी सर, नहीं तो सर्वाइव कैसे करोगे? अब ये -6 तंग ही नहीं करता। -6 कोई ठंडी नहीं होती। -6 में मीन्स -6 मीन्स में हम इंडिया वाली जैकेट पहन के भाग जाते हैं। तो सर वाटर फ्रीज तो होता होगा ना सर, मतलब ये सब होता है कि नहीं होता है? इंडिया में तो तोते उड़ जाएंगे सर। इंडिया में घर हीटेड नहीं है ना हमारे। सर मैंने भी इंडिया में -23 डिग्री पे सरवाइव किया 3 साल सर। मतलब मैं कहाँ पे? हिमाचल के ट्राइबल में रहता है, किन्नौर में सर, कल्पा। तो वहां पे घर अंदर से लकड़ का होगा सर? लकड़ी और सर कंक्रीट के भी हैं अब तो वहां पे। तो कंक्रीट के घर में -23 में कैसे जिएगा कोई सर? सर 19 दिन लाइट भी नहीं देखी है सर। बहुत बुरा होता है। यहाँ पे -35 था। मैं अपनी सिस्टर के घर पे था। मेरी रियल सिस्टर यहाँ रहती है, सो इसलिए मैं सिटी में आ गया। तो -35 था और साथ में विंड चल रही थी, सो इट वाज अराउंड -45। जी सर। तो जब मैं कार में बैठा, मेरी कार पुरानी थी, तो उसका तो स्टीयरिंग भी हीटेड होता है, हीटेड नहीं होता। पुरानी कार थी तो मुझे तो प्रॉपर वो विंटर ग्लव्स डाल के गाड़ी चलानी पड़ी थी। स्टीयरिंग पकड़ा जाता था, इतनी ठंड थी। सर ये रोड तो बहुत बर्फ, रोड पे तो बहुत बर्फ आ जाती होगी सुबह सुबह तो। सर ऐसे होता है, जो मेन रोड बड़े ट्रक्स घूम रहे होते हैं, जो मेन रोड होती है, दे आर क्लियर्ड। प्लस फिर ना एक सॉल्ट होता है इधर। वो सॉल्ट, जैसे मेरे घर में भी सॉल्ट की बोरी पड़ी है, तो वो सॉल्ट जहां जहां छिड़क देते हैं वो बर्फ मेल्ट होनी शुरू हो जाती है। चलिए नाउ ओपन योर केस स्टडी नंबर 17। रिकॉर्डिंग। हाँ जी सर। Recording in progress. ये स्टडी नंबर 17। तो 1 मिनट रुकिए। सर माइक बंद कीजिए प्लीज सर। हेलो। हाँ जी सर। नहीं, कुछ आवाज नहीं आ रही थी इसलिए पूछा। नहीं सर, मैं कुछ ढूंढ रहा था। ओके।
मैं ना एक काम कर रहा हूँ, एक सिंपल for all my case studies we'll take a simple 4-party example. So उसी में हो जाएगा हमारा काम. एक मिनट यार. Yes, please. So I need one person who will read case study number 17 for me. कौन सी केस स्टडी थी सबसे पहली? हाँ, ये केस स्टडी 17. हाँ जी, पढ़िए जी. May I read, sir? कौन पढ़ेगा? मैडम दीप्ति, will you read it please? And I need 2-3 people to please put on your cameras. MTEX Bank, Mumbai opened a letter of credit on behalf of MS National Manufacturing Inc. कोई और पढ़ेगा please? Anybody else? मैम के माइक में वॉइस क्लियर नहीं है. Anybody else who would like to read? Mumbai opened a letter of credit on behalf So who is our opening bank? This is our opening bank is MTEX Bank. MTEX Bank, sir. MTEX Bank, Mumbai. This is our opening bank. Okay. on behalf of National Manufacturing Inc. So this is our importer, National Manufacturing. Okay. for import of 10,000 pieces of good quality cotton shirts as per specification detailed in the proposal. 10,000 pieces of good quality cotton shirts. Okay. The beneficiary was Mrs. Timken of USA. Beneficiary is the exporter. It is Timken. Everybody else, please mute your mic. सिर्फ सर का ऑन होगा, बाकी सबका माइक बंद हो जाए. हाँ जी. The confirming bank was Citibank, New York. And confirming bank is Citibank, New York. Citibank. This is a confirming bank. On 10th October 2016, हाँ जी. the exporter submitted the documents to the confirming bank for negotiation. On 10th which October. what's the date for? Which date? 10th October 2016. 10th October. 10th October 2016. Documents are given for negotiation. Okay. The confirming bank, on receipt of the documents, negotiated the documents and sent the documents to MTEX Bank on 17th October 2016. So he sent the documents on 17th October. Okay. 15th and 16th October 2016 being Saturday and Sunday. Okay. MTEX Bank refused the documents as the quality of goods was not as per the performa invoice.
So this opening bank refuses the payments because they say the quality of the shirts does not match. बट सर बैंक को तो डॉक्यूमेंट देखना है ना, क्वालिटी नहीं तो अभी देखना। आप पढ़ो तो सही ना सर, पढ़ो तो सही ना सर। हाँ जी। Then the question is whether MTax Bank was justified in refusing the documents on the plea that the quality of the goods are not as per performa invoice. हाँ जी। So this is a question whether the MTax Bank is justified. Now इस क्वेश्चन में see ये सिर्फ पहला क्वेश्चन ही आपको करना है, बिकॉज द फर्स्ट वन इज द ओनली मेन केस स्टडी, बाकी तो सिंपल जस्ट वो हाथी के दांत है खाने के। और नहीं है सर, इतना बड़ा स्टेटमेंट सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए है। सर अभी आप वेट करो, अभी आपको 2 पेज का क्वेश्चन भी दिखेगा और वो भी पेपर में आया हुआ दिखेगा, ठीक है। सो इसका आंसर है ये ऑप्शन बी एंड डी। सो व्हाट इज ऑप्शन बी? ऑप्शन बी कहता है द स्टैंड टेकन बाय एमटेक्स बैंक इज नॉट करेक्ट बिकॉज एज पर आर्टिकल 4 ऑफ यूसीसी 600, यार प्लीज अपने माइक बंद करो यार, जिसके पीछे डिस्टर्बेंस है माइक बंद करो, स्टेट्स दैट a LC by its nature is a separate contract from other contracts. Okay, LC is a separate transaction from the underlying contract. Banks should discourage any attempt to include contract as integral part of the LC. कि भाई बैंक का काम सिर्फ LC एक सेपरेट डॉक्यूमेंट है, बैंक का काम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स चेक करना है, बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट की इंटरनल डिटेल्स है दैट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द बैंक। इज इट क्लियर और नॉट? ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है सर? अंडरलाइन जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है, मेन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर। तो सर जो एमटेक्स बैंक है उसने रिफ्यूज क्यों कर दिया वो एलसी को? सर तो वही तो वो पूछ रहे ना, क्या उनका रिफ्यूजल सही है? आंसर है नहीं, उनका रिफ्यूजल सही नहीं है, क्योंकि बैंक का काम सिर्फ डॉक्यूमेंट चेक करना है, गुड्स की क्वालिटी चेक करना नहीं है। और दूसरा वो कहता है कि भी एलसी एक सेपरेट अलग कॉन्ट्रैक्ट है, एलसी को आप बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ मिक्स नहीं कर सकते। ये बेसिकली इस केस स्टडी में वो कहना चाहता है। बस ये हो गया था हमारा। दिस इज सर आर्टिकल 4 तो बुक में है ही नहीं सर कहीं पे। सर वो प्रीवियस स्लाइड सर, दिस वन। एक मिनट, बहुत आर्टिकल्स है मैम, इसको आपको यू डोंट हैव टू ड्रॉ दिस, यू डोंट नीड इट। दिस इज योर केस स्टडी नंबर, कौन सा ये? 17 केस स्टडी नंबर 17। चलो राइट। सो नेक्स्ट इज यू मूव टू, एक मिनट रुको, मेरे को देखने दो ये वाली करनी है कि नहीं करनी, रुको। ओके yes, please read question number, case study number 18. नेशनल बैंक इन मुंबई ओपन एक मिनट मेरे को ना स्क्रीन एडजस्ट करने दो। हाँ जी, दिस इज अवर केस स्टडी नंबर 18। लेट मी राइट।
Yes, National Bank Mumbai खाली पड़ी है सर. National Bank Inc. Mumbai opened a letter of credit on behalf of Mrs. Walmart Manufacturing Inc. So now this is our opening bank, or you can say issuing bank. कौन है? National Bank Mumbai. National Bank in Mumbai. Okay. On behalf of Mrs. Wellworth Manufacturing Inc. for import of 1,000 pieces of carpet on 1st of November. Who is the importer? Importer कौन है? LC is always opened on behalf of importer. This is Wellworth. Okay. And for import of what? 1,000 pieces of carpets on 1st of November 2016. 1,000 pieces of carpets. And when was the LC opened? 1st November 2016. Opening date is November 1st, 2016. Okay. Next. The last date of shipment was 15th November 2016. Date of shipment is 15th. November 15th, 2016. Again. And the last date of negotiation was 30th November 2016. So negotiation date 20th November? 30th. 30. 30th November. 30th November 2016. Okay. The beneficiary was Mrs. Timken of USA. Beneficiary कौन है? Timken. Timken of USA. Mrs. Timken of USA. Okay. The confirming bank was Citibank, New York. So the confirming bank is Citibank, New York. Okay. Haan. The beneficiary presented the documents to the confirming bank on 7th of November 2016. So documents were sent on 7th November 16. Okay. With the documents evidencing shipment of goods on 31st October 2016. So documents say that shipment, so this is last day of shipment, this is last day of negotiation. So shipment date is how much? What? 31st October. 31st October 16. Okay. The confirming bank sends the documents to the opening bank for reimbursement of the same as per the LC. Okay, he sends the documents and claims reimbursement. And claims reimbursement. Okay. National Bank Inc. on receipt of the documents noticed that the shipment was done on 31st October 2016. The invoice was dated 3rd October 2016. Now, National Bank says that the shipment was done on 31st October 16. Shipment date is 31st October. यार I request 3-4 लोग अपना कैमरा ऑन करो यार, मुझे नहीं पता चलता ऐसे कुछ भी. हाँ जी, शिपमेंट कब हुई? 31st October 16. इनवॉइस डेट क्या है? 3rd October 2016. Invoice date is October 3rd, 2016. Okay. आगे. While the inspection certificate, analysis certificate, and packing list were dated 25th of October 2016. 25th October. Inspection, analysis, packing were dated 25th October 2016. 25th October 2016. Okay. हाँ जी.
they rejected the documents notifying discrepancy that the documents were dated prior to the date of credit. So National Bank rejected the documents, and what was the reason for rejection? The documents were dated prior to the date of credit. Okay, date of credit क्या है? 1 नवंबर. उन्होंने डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिए कि भाई एलसी ओपन हुई 1 नवंबर को, और बाकी जितनी भी डॉक्यूमेंट डेट्स हैं they are before the date of LC. How is it this possible? And they rejected the documents. अब इधर देखिए, I'll give you a hint. ये जितने भी LC के क्वेश्चंस आएंगे ना, यूज कॉमन सेंस. कॉमन सेंस यूज करोगे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी. फाइनेंस के ज्यादा कॉमन सेंस यूज करो. अब इधर देखो भाई, उन्होंने गुड्स बना के शिपमेंट कब की? 31 अक्टूबर को. When did they ship them? 31 अक्टूबर. बिफोर शिपमेंट इंस्पेक्शन हुई है. इंस्पेक्शन इज बिफोर द शिपमेंट और आफ्टर द शिपमेंट? सर बिफोर द शिपमेंट. तो इज देयर एनीथिंग रॉन्ग इन दिस? टेल मी. यस सर. क्या रॉन्ग है भाई? जब जहाज ही चला गया, जब आपका जब शिप चला गया, शिप के जाने के बाद इंस्पेक्शन करोगे कि पहले? सर पहले करेंगे सर. तो फिर तो ठीक है. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. टेल मी क्या रॉन्ग है? सर गलत है सर. इंस्पेक्शन तो पहले हो सर एलसी 1 नवंबर को हो जाने के बाद. सर एलसी को छोड़ो. मेरा क्वेश्चन है कि शिप कब हुआ? 31 अक्टूबर को, और उसकी इंस्पेक्शन कब हुई? 25 अक्टूबर को. तो इसमें कुछ गलत है? नहीं सर, इसमें क्या गलत है? उसमें कुछ भी गलत नहीं है. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. इनवॉइस भी पहले बन गई भाई. गुड्स जब प्रिपेयर करके, जब फैक्ट्री से गुड्स प्रिपेयर हो गए, जब उन्होंने बिलिंग कर दी, उन्होंने बिलिंग 3 अक्टूबर को कर दी. इज देयर एनीथिंग रॉन्ग? नो. उसके बाद जब वो शिपिंग उसके बाद उनकी इंस्पेक्शन हो गई, वो भी ठीक है. उसके बाद 31 को शिप हो गई, वो भी ठीक है. अब सपोज करो दैट द एक्सपोर्टर सेज कि नहीं यार, पता नहीं ये पेमेंट भेजेगा कि नहीं भेजेगा. वो कह सकता है कि यार एलसी भेज, फिर जाएगा सामान. तो उन्होंने एलसी अगले दिन भेज दी. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. व्हाट इज रॉन्ग इन इट? देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. हाँ, अगर ये किया होता उसने, सर शिपमेंट के बाद होता तब होता ना इशू. तो सर इसमें रॉन्ग तो है ना? नहीं, इसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है. ये सब कुछ ठीक है. नहीं सर, एक मिनट सर, एक मिनट. अगर सपोज ये डेट ऑफ इंस्पेक्शन 3 नवंबर दी होती, देन इट वुड हैव बीन रॉन्ग. कि भाई शिप तो चला गया ऑन 31 अक्टूबर. शिप इज गॉन. वेयर डिड यू डू द इंस्पेक्शन? इंस्पेक्शन आपने इंडियन ओशन के अंदर जाके की थी? कहां की थी? Then it would have been wrong. In this case, there is nothing wrong. Let us see. So now he says whether National Bank INC was justified in rejecting the documents on the plea that documents were dated prior to the date of credit. The answer is again both A and B. So this point you will remember, that rejection of opening bank is not as per UCPDC, as Article 14 subsection 1 specifically provides that documents can be dated prior to the LC. So this is the rule that you have to remember. Documents can be dated prior to the LC, but should not be dated after the date of presentation. What was the date of presentation over here? The date of presentation was 7th November. The documents can be dated before the date of LC. Date of LC is 1st November. Documents can
dated before that as per law it is okay, but it cannot be after the date of presentation. जब आपने प्रेजेंट ही कर दी उसके बाद थोड़ा इंस्पेक्शन वगैरह कुछ होगा, वो कुछ नहीं हो सकती. Okay, so in this case, this is the logic that you have to remember. That is point number A. Then he says point number B तो ऐसे ही है, documents presented are needed to be dated as per terms of LC only if, okay, that second says documents presented are needed to be dated as per the LC terms only if it is given in the LC. Now, if in the LC it is given that by this date this will be done, then it is a separate thing. So in this case, the bank is wrong in rejecting the documents. Bank has to pay. So basically, all you have to remember is these 2 points, these 2 logics you have to remember. That's all. Now come to yeah, open case study 19. सर हाँ जी बोलिए. सर इसमें कहने का है कि जो एप्लीकेंट्स का बैंक है जिसने रिजेक्ट कर दिया, उसने सही किया? नहीं सर, गलत किया. इस केस में सब कुछ ठीक था. हाँ जी, केस स्टडी नंबर 19 पढ़िए सर. ABC Bank issues an LC in favor of Sunflower Cooperative Limited. So who is the issuing bank? ABC Bank. In favor of, favor किसके फेवर में की? Sunflower Cooperative Limited. Sunflower के. Okay. Covering shipment of 1,500 cartons consisting of 2,500 pieces of sweaters, woolen garments. So 2,500 pieces in 1,500 boxes, cartons. Okay. From Chennai port to Dubai port. From Chennai to Dubai. Okay. The LC mentions that partial shipment is not allowed. So LC says that partial shipment is not allowed. Okay. The beneficiary hands over 100 cartons to the shipping company on 10th of November 2016. So beneficiary sends, मैंने एक मिनट ship भी बनानी है. So let us make a ship over here. So this is the ship. So beneficiary gives him. दोबारा पढ़िए सर. Beneficiary gives him. Beneficiary hands over 100 cartons to the shipping company on 10th of November. 1,000 boxes on 10th November 2016. On 10th November, okay. And another 500 cartons on 14th of November 2016. Another 500 boxes on 14th November 2016. On 14th
November 16. Okay. The shipping company issues bill of lading for the first 1,000 cartons on 12th November 2016. So shipping company issues the bill of lading for the 1,000 boxes on which date? 12th November. 12th November. Okay. And another bill of lading covering 500 carton on 16th November 2016. और जो 500 boxes का bill of lading came on, issue was issued on 16th November. Okay. Both the consignments are to be shipped by a vessel which is due to leave Chennai port on 19th November 2016. Now, this is the main thing. Both these boxes, both these 500 boxes are going on the same ship. On which date? On 19th November 2016. 19th November 16. Okay. Basically, हो क्या रहा है? Bill of ladings are dated differently, but they are going on a single ship on the same date. आगे तो ये तो फुल शिपमेंट हुआ ना सर, पार्शियल तो देखते हैं ना सर, आप क्वेश्चन पढ़ो। हाँ जी, राइट सर। Thus, the total goods under the LC, that is 1,500 cartons, are shipped on a single vessel, but with two bill of ladings. So ship is same, but different bill of ladings. All right. Two bill. Okay. Next. The LC issuing bank, on receipt of documents drawn under the LC, rejects the documents. So the issuing bank, ABC Bank, rejects the document, stating the shipment is not made under one bill of lading and as such constitutes partial shipment. And he says that this is a partial shipment. It is not allowed. Which is not permitted under the LC. Because he says partial shipment is not permitted in this LC, and reject the documents. Why? Because of two different bill of ladings. Okay. The issuing bank informed the negotiating bank that goods are held at their disposal and further instructions are awaited. So issuing bank will say, ABC Bank says that he informs the message, informs the negotiating bank that I'm waiting for your further instructions what to do. So have you understood the question now? Now you tell me with your common sense, is this rejection justified? Use your common sense. नहीं सर, दोनों पार्शियल कैसे होंगे सर? एक ही तो हुआ। That's it. See, ये तो वही बात हो गई कि भी मैंने मिस्टर कीर्ति हैज अ ट्रांसपोर्ट कंपनी, ठीक है, मैंने कहा जी पार्शियल शिपमेंट इज नॉट अलाउड। मैंने इनके ट्रक को 10 बॉक्सेस दे दिए 12th नवंबर को, 5 बॉक्सेस दे दिए 16th नवंबर को, पर ट्रक तो एक ही है ना यार, शिपमेंट तो इकट्ठी आ रही है ना, ट्रक डिफरेंट तो नहीं है ना भाई। मैंने एक दिन पहले उनको पकड़ा दिया, हाउ डज दैट मैटर? तो 2 पैकिंग होगी सर, इतना ही तो फर्क हुआ। हाँ सर, 2 ही पैकिंग हुई, इतना ही तो फर्क हुआ, और पैकिंग के हिसाब से उसका बिल वही तो कह रहा हूं ना सर, शिपमेंट तो सेम हो रही है ना सर, दिन सर ना भाई। ट्रांसपोर्ट कंपनी ने यार सुन लो ना यार, ट्रांसपोर्ट कंपनी ने आगे पीछे रिसीव किया, दैट डज नॉट मैटर, बिकॉज द डेट ऑफ शिपमेंट, बिकॉज द मोड ऑफ शिपमेंट इज द सेम शिप, date of shipment is same, so it is
not a partial shipment. It is a single shipment. And this rejection is incorrect. Clear हुआ जी कि नहीं? So, in this case, what is the answer? Answer is B and C. What is B and C? He says, as per Article 31 of UCP, a presentation of documents consisting of more than one set of transport documents covering shipment of goods on same means of transport and has same journey will not be considered as partial shipment. That means one set of transport documents which cover shipment of goods on same means of transport. Ship is same journey. This will not be treated as partial shipment, even if they indicate different dates of shipment. Even if the dates are written separately, but ship तो एक ही है ना यार. Yes sir. आप ये थोड़ा कि आप पहले भेजोगे, अभी शिप बाद में भेजोगे. सर हिंदी में बताना थोड़ा सा. मैं बता रहा हूँ. ठीक है. The rejection of documents by LC opening bank is not correct as per the Article 31 of UCP, and bank has to pay and honor the documents. सर हिंदी में ये है, इधर देखिए कि 2500 पीस 1500 डब्बों में डाल के भेजने थे, पर एलसी पे लिखा था कि पार्शियल शिपमेंट नहीं कर सकते, शिपमेंट इकट्ठी आनी चाहिए. एक्सपोर्टर ने क्या किया, 1000 डब्बे शिपिंग कंपनी को पकड़ाए 10 नवंबर को. उनका बिल ऑफ लीडिंग इशू हो गया 12 नवंबर, सीट इशू होगी. 500 डब्बे 14 नवंबर को, उनका बिल ऑफ लीडिंग इशू हो गया 16 नवंबर. नहीं, बिल ऑफ लीडिंग चाहे अलग इशू हो गए, जा तो एक ही शिप में रही है ना, और एक ही तारीख को जा रहे हैं ना, तो ये पार्शियल शिपमेंट नहीं है. एबीसी बैंक ने कागज रिजेक्ट किए कि पार्शियल शिपमेंट कर रहे हो, ये तो अलाउड नहीं है, इसलिए उसने रिजेक्ट कर दिए. ये पार्शियल शिपमेंट नहीं है क्योंकि बिल ऑफ लीडिंग चाहे अलग अलग है, लेकिन शिप तो सेम है ना, डेट ऑफ शिपमेंट तो सेम है ना. हाँ, अगर शिप भी अलग, एक पॉसिबिलिटी और बनती है सर, अगर 2 शिप में जाता, सेम डेट में जाता, तब सर क्या होता? तब दिक्कत हो सकती थी. नहीं सर, सेम डेट में जाता, 2 शिप में जाता, से एक कॉन्वे बना के गया है सर, पार्शियल शिपमेंट तो पार्शियल हो गई ना. ओके, तो पार्शियल काउंट होगा ना सर. हाँ, शिपमेंट तो पार्शियल हो गई ना. उन्होंने कहा कि पार्शियल शिपमेंट नहीं चाहिए. 2 शिप हो गया तब तो पार्शियल हो ही जाएगा. चलिए नेक्स्ट आ जाइए, केस स्टडी नंबर 20. क्या टाइम तो होगा? बस ठीक है, आज एलसी की केस स्टडीज खत्म करेंगे, बस ज्यादा नहीं करेंगे. कल एक्सपोर्ट फाइनेंस और बाकी चीजें खत्म कर देंगे. केस स्टडी कौन सी बताई से? 21 2020 पढ़ना. 20 कौन सी है ये? मैं एक मिनट को, मेरे को ना फिर से स्क्रीन शिफ्ट करनी पड़ेगी. 20 बोली थी ना. विच केस स्टडी आई जस्ट टोल्ड यू? 20 सर. 20. एक मिनट, जस्ट गिव मी सेकंड. Everybody else please go on mute. Yes please, case study number 20. हाँ जी. MTEX Bank Limited issued an LC in favor of Malwa Manufacturing Limited. So issuing the bank is MTEX Bank. Issued LC in the favor of Malwa Manufacturing Limited. Malwa Manufacturing. Okay. The negotiating bank was Citibank, New York. So Citibank, New York is the negotiating bank.
Next, आगे. On receipt of documents on 10th August 2016, Wednesday. So MTEX Bank Limited. एक मिनट. So negotiating bank sent the documents. Received the documents. Received the documents. On receipt of documents. एक मिनट sir, एक just give me a second. Documents received by MTEX on which date? 10th August 2016, Wednesday. 10th August 16, that is Wednesday. Okay, Hanji, पढ़िए. MTEX Bank Limited took 2 days to examine the same and referred the documents to the applicants for their acceptance on 12th August 2016, Friday. So MTEX Bank took 2 days, and after that they referred the documents to the applicant. They sent the documents to the applicant. Okay. On 12th August 2016, Friday. So send the documents on 12th August 16, that is Friday. All right, next. The applicants came up with a discrepancy in documents on 17th August 2016, Wednesday. So applicant found the discrepancy on which date? 17th? 17th August 2016, Wednesday evening. That is Wednesday evening. Okay. Okay. Stating that the document needed to be rejected as the bill of lading was not stamped with on-board stamp. And initial and उसने documents reject किए. उसने कहा कि bill of lading के ऊपर there is no stamp of on board. There is no on board stamp. And he found this discrepancy on 17th August. Okay. आगे. And initialed by the shipping company. Next, आगे. MTEX Bank Limited sent a swift message of rejection to Citibank New York on 18th August 2016. Very next So, day. message of rejection. Message of rejection went on. 18th August. 18th August 16. So 18th August 16 is what date? Day क्या है? Day Thursday sir. Wednesday, Thursday बनेगा 17th. Thursday हो जाएगा. Thursday. चलो, हाँ जी. Now, on receipt of the swift message from the issuing bank informing rejection of documents and discrepancy as informed by the applicant, the negotiating bank referred the matter back to the opening bank, stating that the message of refusal and notification of discrepancy was not received within the time period of 5 banking days, and as such claim to be reimbursed as per LC terms. So Citibank says, Bhaiya, you have to find the discrepancy within 5 banking days. You are late. Please pay me now. Reimburse me. Please pay or reimburse. So this is the case. क्योंकि वो कहता है कि you took more than 5 banking days. Now let us see whether it is correct or not. हाँ जी. So what was the date of receiving? When did MTEX Bank received the documents? 10th August. 10th August 2016, Wednesday. So received documents were 10th August.
Okay, so 10th will not be counted. Yes sir, excluded 10th. ठीक है ना? So day 1 will be 11th, and 11th is Thursday. Day 2 will be 12th. It will be Friday. Saturday holiday, Sunday holiday, Monday holiday. Why? Gandhi Jayanti. Oh, sorry, Independence Day. Monday is a holiday because 15th August holiday. Okay. Then Tuesday, day 3 will be 16th, that is Tuesday. Day 4 will be 17th, that is Wednesday. Day 5 will be 18th, that is Thursday. And he informed on the 5th day, that is Thursday. That means Amtex Bank is not late. Is that clear or not? Clear, sir. Last line is not visible, yes, sir. Last line. Yes, sir. Just give me a second. Now is it okay? Let me एक minute. Just give me a second, please. एक minute. Yeah. Can you see now? Yes, sir. सर एमटेक्स बैंक इंडिया का बैंक है. ओके सर. Marine? Huh? Shall we proceed? Yes, sir. चलिए. Now, last case study of the day. We will do सर ये क्वेश्चन कितने नंबर में आएंगे? जैसे ये केस नंबर 20 है. सर एक नंबर भी हो सकता है, 2 नंबर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं. काफी टाइम कंज्यूमिंग है ये तो, मतलब एक को पढ़ना. बिल्कुल है सर. Come to case study 23. This has come in the paper as it is for 3 months. और ये case study देख लो कितनी बड़ी है. It starts from here and it goes till the next page, full next page. 1.5 page सिर्फ question है. Case study 23. इस तरह का क्वेश्चन तो एग्जाम में छोड़ ही देने में भलाई है सर. चलो सर, हो सकता है आपको सेम क्वेश्चन आ जाए, फिर क्यों छोड़ना.
सर जो अभी किया था उसका सी ऑप्शन था ना? सर क्या ऑप्शन था वो, मैं अभी ऑप्शन में देख देता हूँ सर। अभी सर कोई बात नहीं सर। पीछे आंसर्स में दिया होगा सर। ओके सर, नो प्रॉब्लम। This is now we are doing case study 23. सर 21 and 2 होमवर्क? नहीं करना ही नहीं, बस जितना करवा रहा हूं उतना बहुत है। ओके चलिए जी। नो दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बट अ इजी केस स्टडी। हाँ जी प्लीज रीड। Express Bank India opening bank issued an irrevocable आराम से सर, आराम से। So issuing the bank is Express Bank India. Express Bank India. ओपनिंग Okay. बैंक issue एक ही बैंक हो गया सर? हाँ जी एक ही बात है ना, वो ओपनिंग बैंक इश्यूइंग बैंक एक ही होता है। हाँ जी। Issued an irrevocable and confirmed LC for $10 million on behalf of its applicant, Message Timex Inc. in favor of beneficiary. एक मिनट, मैसेज कौन है? टाइमेक्स? Timex Inc. टाइमेक्स INC, ये एप्लीकेंट है। ओके। In favor of beneficiary, Message Matchless Manufacturing Corporation Inc. New York. So Messrs Matchless Manufacturing New York. Okay. And advised is through National Corporation Bank New York, which added its confirmation. So NCB New York is the advising bank and confirming bank. ओके जी, ये हमारी चार पार्टीज हो गई। नाउ Matchless Manufacturing Corporation Inc. New York, after shipment of the goods, presented the documents to National Corporation Bank New York for negotiation. So they ship the goods and they present the documents for negotiation. Okay. On examination, National Corporation Bank New York found two discrepancies, namely late shipment of consignment. So they found two defects. Two discrepancies. Statement found defects. First was late shipment. Late shipment of consignment and late presentation of documents. And late presentation. That means documents also came after 21 days and the shipment is also late. Okay. Okay. And he. Okay. सर लेट प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट्स लिख दीजिए। वो एक ही बात है। हाँ जी। NCB New York informed Matchless Manufacturing Corporation Inc. New York about the discrepancies and sought instructions. And he found the discrepancies and he informed Matchless Manufacturing Corporation New York and informed them, and he said, now you tell me what should I do next. Matchless Manufacturing Corporation Inc. New York requested NCB New York to forward documents to Express Bank India for approval and payment under credit. So he said that you send the documents, okay, for payment आ जाएगी। Next. The Express Bank, on receipt of documents, found that two discrepancies were not acceptable and informed Messrs. Timex Inc. about the presentation of documents. So when Express Bank got the documents, he found that these are unacceptable. And what did he do then? उसने क्या किया? Returned. Messrs. Timex Inc. did not waive the discrepancies
and नहीं rejected दोबारा the सर document. पहली लाइन दोबारा पढ़ना, ऑन रिसीट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय एक्सप्रेस बैंक टाइमेक्स इनकॉर्पोरेशन को Found बताया that उसने two इन्फॉर्म कर दिया। discrepancies सर ये Information पढ़िए, कर दिया। प्लीज लेट 1% रीड इट सर। हाँ जी पढ़िए सर। The Express Bank, on receipt of documents, found that two discrepancies were not acceptable and informed Messrs. Timex Inc. about the presentation of documents. And he informed about the issues, informed about the defects. Okay, then Messrs. Timex Inc. did not waive the discrepancies and rejected the documents. Timex rejected the documents. He says, no, it is not acceptable to me. Please reject the documents. Okay, now Express Bank sent the message to NCB stating that the applicant has refused to accept the documents due to a late presentation and late shipment. so Express Bank sends a refusal message. Okay. Further, the applicant Messrs. Timex Inc. informed that they will contact Messrs. Matchless Manufacturing Corporation Inc. directly and that the Express Bank was holding the documents. इसको दोबारा से पढ़ो सर, इस लाइन को दोबारा से पढ़ो। Further, the applicant Messrs. Timex Inc. informed that they will contact Messrs. Matchless Manufacturing Corporation Inc. directly. हाँ, उन्होंने कहा कि we will talk to the exporter directly and you hold the documents. And that the Express Bank was holding the documents. And that the documents are held by Express Bank. Next. NCB informed the beneficiary about the rejection of documents by Express Bank. NCB informs the exporter that your documents have been rejected. Okay. The beneficiary instructed NCB to send a message to Express Bank, requested them to hold the documents at the disposal of NCB pending further instructions. There you go. This is the most important message. So now NCB sends a message to Express Bank. This is the message to hold documents on behalf of NCB. That you hold the documents on my behalf and I will tell you what to do. You cannot do anything now. Next. The message was accordingly sent by NCB. Okay, next. Upon receipt of message, Express Bank contacted Timex Inc., who then instructed NCB through Express Bank to pay the documents as presented since they wanted the merchandise. Now, once this message reached, after a few days, and he told that this is a message I have received, after a few days, all of a sudden, the Express Bank applicant says, accept the documents. Accept the docs and pay. Because now they want the material. Okay. ये why sudden change of heart? पहले तो इसने रिजेक्ट कर दिया, अभी क्यों एक्सेप्ट किया वो देखते हैं। हाँ जी। Express Bank sent the message to NCB stating that Timex Inc. has now accepted the documents and authorized the payment of $10 million US. So Express Bank sends a message that see, our applicant has accepted the documents and he has authorized the payment of $10 million. So you please claim your reimbursement and take your money. As such, okay.
As such, Express Bank requested NCB to claim reimbursement. Okay, next. On receipt of the message, NCB contacted the beneficiary. So when NCB, he sent the message of acceptance. The beneficiary, which was further sent to exporter. Now, the beneficiary informed that they will not accept the payment under the credit. now see, this is the issue. Now the exporter says, I will not accept the payment. पहले टाइमैक्स से कट रहा था, बोल रहा है। क्या बोल रहे हो? पहले उसने रिजेक्ट कर दिया सर, अब उसने रिजेक्ट कर दिया पेमेंट। हाँ, नहीं, अब ये देखो ना, रिजेक्ट क्यों किया? हुआ क्या, इन बिटवीन ये जो गुड्स थे, इनका प्राइस इंक्रीज हो गया. So Matchless sold the same goods which were rejected at the Timex to somebody else for a higher price. Yes, sir. अच्छा, अब Timex की जानने का, now Timex wanted that I should give the documents at a cheap price. So immediately he accepted the documents. That okay, I will accept. Because now Timex knows expensive goods. आपको समझ में आया क्या है? लेकिन लेट तो सर इसने ही भेजा था ना, एक्सपोर्टर ने तो लेट किया है यार. फिर वही बात, पहले एक्सपोर्टर ने लेट भेजा, एप्लीकेंट ने मना कर दिया. हाँ, ठीक है. बाद में क्या हुआ, जब मना कर दिया तो गुड्स नहीं. ठीक है, एक्सपोर्टर की तो लॉटरी लग गई. सपोज करो मैंने आपको एक गुड 100 रुपए में बेचा, आपने मना कर दिया, मैंने वही गुड बाजार में 120 में बेच दिया. अच्छा, आपको तो गुड चाहिए ना, आप अगर किसी और से लेने जाओगे तो आपको 120 में देगा ना. तो आपको अब आपकी जब निकल गई, अब चाहते हो कि नहीं यार वो सस्ते वाला गुड ठीक है, उससे वापस ले लेते हैं कि चलो ठीक है मैंने एक्सेप्ट कर लिए, पैसे ले ले जाओ. अब आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ठीक 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 सर. हाँ जी. They informed that on receipt of refusal of documents, they have resold the merchandise to another buyer for a higher price, as the market had turned in their favor. Next. The beneficiary stated that as the payment was rejected, they had asked the documents to be held at the disposal of NCP. Here it is. This is the most important point. He said, because you rejected the payment, we specifically messaged you to hold the documents on behalf of NCB. How could you release the documents? When we told you to hold the documents, how did you release the documents to the applicant? This is wrong. आप समझे? Did you understand or not? सर एक बार फिर सर आपकी आवाज सिर्फ मेरे को सही नहीं आ रही क्या सभी को? नहीं हाँ सर, जी, आ रहा है, मुझे भी सर कम आ रही है. आपकी आवाज कोई आवाज कट रही है. डिस्टर्बेंस आ रही है सर. सर नहीं आ कट रही है सर, कट रही है आवाज. कट रही 10 है. मिनट से हो रहा है सर. वो एक कट रही है. हाँ जी, अब मेरी आवाज आ रही है? यस सर. यस सर. देखो, when this happened, exporter said that see, you rejected the documents, I have resold the goods to somebody else at a higher price. Okay, you please return my documents because we specifically sent you a message to hold the documents on behalf of National Corporation Bank New York. समझ आया जी कि नहीं कि आप तो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर चुके हो. सो इट इज ओवर. आई टोल्ड यू दैट होल्ड द डॉक्यूमेंट्स ऑन माय बिहाफ. नेक्स्ट. The beneficiary stated that as the payment was rejected, they had asked the document to be held at the disposal of NCB pending further instructions. NCB sent the message to Express Bank
stating that the payment has been refused by the beneficiary since the applicant had rejected the documents as presented. Upon such rejection, the beneficiary has resold the goods to another buyer. The beneficiary did not enter into any agreement with the applicant to authorize payment after rejection by the applicant. हाँ जी, उन्होंने कहा कि हमारा we don't have any agreement with you that after you reject the documents, if you change your mind and you accept the documents again, he said there is no such agreement. You rejected the documents, that transaction is over. आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? सर आ रही है, लेकिन वो ना बीच बीच में रुक रही है सर आवाज आपकी। पता नहीं सर क्या हो रहा है। सर हमारा हाँ वही सर बफरिंग कर रही है सर आपकी वॉइस। करो सर, लेट मी चेक द स्पीड। सर ठंडी का बर्फ पड़ रही है, डिस्कनेक्ट नेट। नहीं सर तार बार जम गए होंगे सर। डिस्टर्बेंस तो है सर आवाज में। इसने पढ़ा नहीं और इसने लास्ट मिनट में फॉर्म भर दिया। वो गया ट्रेनिंग कॉलेज में, कैटेगरी है ना तो उनको ट्रेनिंग रहता है। भाई जब पीछे बातें चल रही हो ना कोई और तो माइक बंद किया करो। हाँ जी चलिए नॉर्मल तो बिकॉज माई स्पीड इज फाइन। मे बी ये कुछ टेक्निकल इश्यू है आज, जनरली कभी होता नहीं है, या वंस इन अ ईयर इश्यू होता है कि स्टिल नॉट क्लियर। ओके ये सर स्क्रीन हटा के देखियो सर। सर इसे कैसे वीडियो कॉल करना है? चलिए फिर इफ यू कैन नॉट हियर माय वॉइस जी सर ठीक है सर। अब तो लास्ट में पहुंच गए सर। समझ में भी नहीं आ रहा है सर, ये बहुत ज्यादा है। कुछ दिक्कत आ रही है। नहीं सर करो, आप कंटिन्यू करो। करवा रही है सर, खत्म हो जाएगी सर। यहाँ तक थोड़ा फिर पढ़ना पड़ेगा। मेरी आवाज तो सर इसको रख लेंगे सर, छोड़ दो सर। ये नहीं सर ये जब इतना मेहनत बेकार हो जाएगा सर। इतना करवाती है तो एक पैराग्राफ तो बचा हुआ है सर। थोड़ा सा मेरी बात सुनिए प्लीज। इफ यू कैन somehow understand me, listen to me, let me complete it. It is only 2 minutes are left. 90% अब सही है सर आवाज। आवाज ठीक है सर कि नहीं? सर सभी को म्यूट कर दीजिए। प्लीज एवरीवन गो ऑन म्यूट। बीच में बहुत सारा मिस हो गया सर। Everyone please go on mute. Everyone except the reader sir. Everyone on mute. Only Mr. Reader will be on unmute. हाँ जी। Furthermore, the beneficiary has informed that the applicant has obtained title of the goods by producing an original bill of lading. See, he said that. Can you read the previous line, sir? Right. Okay, sir. Start से करता हूँ. NCB sent the message to Express Bank stating that the payment has been refused by the beneficiary since the applicant had rejected the documents as presented. Upon such rejection, the beneficiary has resold the goods to another buyer. The beneficiary did not enter into any agreement with the applicant to authorize payment after rejection by the applicant. Now, see, NCB said, see, you first rejected the documents, transaction is over. You rejected the documents, it is game over. I have resold somebody else. There is no agreement between us that you can accept. Oh, yaar. सुनो यार वैसे ही बट समझ आ रहा है। सर कंटिन्यू सर। समझ आ रहा है सर, कंटिन्यू करिए। सर। हाँ सर थोड़ी दिक्कत जरूर है पर समझ आ रहा है। तो सर इतनी छोटी छोटी बातों के पीछे लग रहे हैं यहाँ पे। यार प्लीज माइक बंद कर लो यार, म्यूट कर लो प्लीज। तो ही सेज कि there was no agreement
between me and you that even after rejecting, you can accept the documents again. There is no such agreement. We have sold the goods to somebody else. Matter is closed. Return our documents. Okay, next, sir. Mr. Satish, please read. Unmute yourself and read, sir. Upon such rejection, the beneficiary has resold the goods to another buyer. The beneficiary did not enter into any agreement with the applicant to authorize payment after rejection by the applicant. Furthermore, the beneficiary has informed that the applicant has obtained title of the goods by producing an original bill of lading. Who informed this thing? Beneficiary has informed that the applicant has obtained title of goods by producing an original bill of lading. उसने कहा जी कि बिल ऑफ लेडिंग हमने दे दिया उसको और टाइटल ऑफ गुड्स ले लिया क्योंकि पेमेंट रिसीव कर ली. नेक्स्ट. NCB further stated that the release of the documents entrusted by them to the buyer was unauthorized and in violation of URC 522. Now, this is the main thing. NCB told Express Bank that when we specifically told you to hold the documents on our behalf, this is wrong. You release the documents to the applicant. Sir. Fine. Next. क्या बोल रहे हो? Sir, can't hear, sir. Leave it, sir. Let us please. ये यहाँ तक case study I've done. The remaining 5-minute case study I'll finish tomorrow. Don't worry. Okay. I'll give you the summary tomorrow, and we will finish this case study. And tomorrow we will start with export finance. I don't know. Maybe sometimes Zoom में भी कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है. It's all technology, so we'll do it tomorrow. In the meanwhile, you can see the recording. ये recording upload हो जाएगी कल सुबह. Okay जी.